to organize different workshops and training programs which will cover the co-authorship research areas and women empowerment and remote. So we will also initiate our programs of remote PhD with the collaborations of UK universities, and so that is the part of our project. So this is the fourth workshops we are organizing under this project. Now I would like to introduce about the Sir Hassan. He is highly qualified and accomplished academic researcher and manager with over a decade of experience in computer science, specializing in artificial intelligence and data science. So as you know, the name of our workshop is also Technical Writing and Generative AI. So sir will deliver us a wonderful talk about the use of AI. And sir is also currently serving as tenured professor and has played a vital role in establishing advanced degree programs including MS and PhD in computer science. He also holds a PhD in computer science and completed a prestigious postdoctoral fellowship at Chonam National University, South Korea. So Dr. Hassan has led and contributed to numerous national funded research projects, including those under the National Center for Cyber Security and the Pakistan Air Force. He is a author of 30 plus publications in high impact factor journals and has earned recognition through awards such as the Vice Chancellor's Commendation Awards. His expertise is also acknowledged internationally through invited talks, global collaborations, and professional membership on editorial and review boards of renowned scientific journals. So, sir, I welcome you. Thank you. Please do not forget to fill the questionnaire. We will give you after the workshop, and when you will fill that questionnaire, then we will be able to give you the certificate which will be signed by the British Council representative and the Women University of Multan. Hopefully नज़र आ रहे हैं. Thank you very much, madam, for inviting me to talk with your faculty and maybe some graduate students. The topic is technical writings and generative AI. As you know that nowadays, especially the generative AI, has created a lot of you see the opportunities and problems as well. As a teacher, as a faculty member, you may also facing some problems like us, because whatever we give to the students,
and then they just prompt it and immediately they return it, and it's then responsibility of teacher to check it, to grade it, to verify it that, oh, this is a genuine case or not. The same case with the technical writings in the form of research paper, in the form of dissertation, reports, manuals, etc. So maybe sometime you feel that some papers you also observe that it was written using some generative AI models. The prompt was immediately from the introduction. It was started. Oh yes, I can do this, and then blah blah blah. Actually, the policies are going to be, you see, the formulated, and some journals are very clear about the generative AI, and some are asking about the declaration, etc. I have also covered that one. So in this session, inshallah, we will be concluding it in 60 minutes. Maybe if you have a questions in between the lectures, so you please feel free to ask. The first slide here, I am showing the two Nobel laureates. The left one is Professor John Hopfield, and the right one is Professor Jeffrey E. Hinton. So they have awarded the Nobel Prize in Artificial Intelligence. So the Professor John Field actually he was actually a physicist, and he proposed about the neural networks, as some of you may be familiar with the neural networks, especially the Hopfield neural networks. So after that, actually the problem was its training, its weights update, etc. So after he proposed the weight update and the process of how that it works, maybe the recurrent neural networks you may know, and the current models like GPT, DeepSeek, maybe some Grok, etc. So these are frequently using the John Hopfield method about the the training of the models. So I will elaborate that how the training is performed and then how actually the large language model works. So this is the outline. First about some brief introduction, and then about language models, and then large language models, and the use of generative AI in your research. You see the publication or maybe some technical writings, the policies of various publishers like Elsewhere, IEEE, Springer, Taylor and Francis, and then some use cases about the generative AI. And one use case I will let you know about my PhD student who was writing his paper, and then he used some generative AI models. And then he was trying to correct it, and maybe 15 to 20 days he spent. And then he was asking that, oh sir, whatever I have written before, it is not equivalent to that. So let's see, I will share some detail with you. And then at the end there will be some, you see, the question answer session. The introduction, as we all know, we are all academician. First of all, the journal paper, as we know that journal paper has a title, abstract, introduction and background, maybe literature review, proposed methodology, experimental results. These are the parts of the journal paper. Conclusion and references. And then the technical writing might be in the form of thesis, dissertation, report, project statement, project specification, design memo, proposal reports, etc. So all these are included in technical writings. So if we see this diagram, this is actually the brief pictorial representation of research paper organization, introduction, procedure, and discussion. We start from generalization to particular in introduction, and then the procedure, the proposed methodology, and after that, particular to generalization. The results we have obtained, and then we may generalize it. So sometimes we make hasty generalization that have a lot of impact, but we, at least in research papers, the technical or scientific community are very careful about it, so they don't have some hasty generalization. After performing rigorous review and then experiments, they then decided to publish. Now coming toward the language models. So if we don't understand the language models, and then we can't understand large language model,
So if we don't at least understand about large language models, and then we can't understand about the generative AI or generative models. Let me hide it. So actually, it is the language models are not a new concept. So let's suppose we have given a sequence of words, so far the context, and the objective is we need to predict what comes next. Usually nowadays, whenever you write some email or some even write some text and word, and suggestion came, and then you press the tab button, and then automatically it filled that gap. So actually, if we see as a computer scientist, we see at the back end there are some language models. Actually, the language models are trained some data, and from data there are probabilities that this is the probability that if these words appear, after that, let's suppose there are 60 or 70 or 80% chances that these words will appear. So actually, based on the probability, it is predicted. So the probabilities are then, there are several models like hidden Markov model, LSTM, long short-term memory, and other models, so they are playing this role. So we are not going to, in technical detail of those models, but at least we need to understand the language model. So let's suppose the sentence says, I want to, and these are then options. And after that, let's suppose we select, I want to play, and then there are then two options, tennis or video. Okay, so this is actually the language modeling, how this language model works. These, let's suppose these are 5-6 options. Actually, these are the probabilities, or we can say the options, which are available from the training text. The training text is a large text, which is based on some human written, maybe some internet, etc. I will cover some minor detail in next slides. So let's suppose the sentence was, I want to play, let's suppose, tennis. So how the model came to know that I want to, after this sentence, I want to, the word will appear play, and then tennis or videos. Actually, based on that, there are some probabilities. Okay, some probabilities, conditional probability that if, let's suppose, these two words appear, then after that, they say the probability that these words will appear. So based on these probabilities, then the final, let's suppose when we reach here at the tennis, so actually after play, there are probability that tennis and video, let's suppose the tennis probability was 60% and video probability was 40%. The maximum probability, it shows that after, let's suppose, the play, people used to write tennis. So this is based on the maximum probability. So let's suppose that in language modeling, the probabilities are very important, as we know that after we have words, and then every word has a probability of occurrence, and then probability, then the maximum probability, let's suppose we have based on some condition, let's suppose P into W of T, or word of occurrence of T, let's suppose word, etc. W1, W2 up to WT minus 1. So it means that these are the conditions W1 up to WT so fulfilled, and then the final probability we have obtained. So actually these probabilities are obtained from the history from the, we can say that the data we have for the training of, or for the construction or development of that language model. So actually the previous slide, this one is very simple one. So it doesn't have, you see any complex detail. These are just probability. So after that, this language model arises. This language model is based on the neural networks. This is one of the very simple neural network. These are the input units, 2 input units, and the blue one is hidden units, and the yellow one is the output unit. So actually the input and output are fixed. We can't change the input and output. The change, or we can say the parameter we have in our hand, are these weights known as synaptic weights. So these are the weights. If these are optimized, then the chances are that the results will be very accurate. For example, here is a sentence: the color of sky is. We have fed this to the language model,
And the language model predicts that the color of sky is, after that, it appears blue. There is 91% probability that the color of sky is blue. Actually, how this 91% came, it is basically based on the data we have. So based on the data, we have trained this language model, and this language model then, you see the predicting that after we have given the input, this input to the model, and then model predicts that, there is 91% probability that blue will occur. So given a sequence of words so far, predict what comes next. This is actually the function of a language model that predict the next word. So actually, as some of you may know about the hidden Markov model or Markov decision process. And the problem of Markov decision process, or hidden Markov model, was that it was predicting the next state only. So without considering the history of the text. So after that, it came the LSTM, the long short-term memory. Actually, that is remembering some data based on the previous history. So the LSTM performance is much better compared to the simple hidden Markov model. So the problem now is that either we need to create our own language model, or we use some already developed model. Let's suppose the ChatGPT or the other generative models. So we can create our own model. As China, recently you all know that the China proposed or developed a DeepSeek model. So DeepSeek is the Chinese model, whereas the OpenAI ChatGPT is a US American model. So what we need to develop our own model? The first one is collect a very large corpus, very large text data. So it may include a Wikipedia book, Stack Overflow, Quora, public social media, GitHub, Reddit, etc. So these are just examples from the data we obtain. The second one is, the second step is ask the language model to predict the next word in the sentence. So how it will predict the next word? Based on the given data, based on the collected data we have from step number one. And then it may proceed some randomly truncate parts of input sequence, calculate probabilities and missing words, adjust and feedback to the model to match the ground truth. And then step number three, repeat over the whole corpus. So when we develop a model, we proceed it with several thousand iterations known as an epochs. So these epochs will run, and it calculates the weights and optimizes the weights, as we just discussed 2 slides earlier. So actually, we can develop our model, but the limitation of the resources, especially the computational resources, may hurdle us. So we actually practically can't develop such large models. So then we are dependent on others. Let's suppose we're getting some paid services, etc. So now from language model to large language models. So the question is that how good can a language model become? Usually it is a myth that the bigger the better. If the bigger is the model, the better its result. But this myth was broken in 2012 and 2013 when the first officially launched the deep neural networks known as AlexNet. So after AlexNet, the ResNet was proposed. So when they proposed the ResNet, actually there was the architectural, the change in ResNet. So the ResNet model, when they proposed, they performed several experiments by increasing the size of model. By introducing the new hidden layers and size of the model, actually they failed to achieve the higher accuracy. Then they decided that, oh no, this myth is not true, that bigger is the better. But actually the architectural change or architectural novelty matters. And then ResNet breaks the record of AlexNet, and then etc. so on. So since 2018, we have witnessed an extreme increase in model sizes. This graph of the large language model is an interesting. You see the vertical axis, number of parameters, whereas horizontal axis, year-wise performance.
GPT-1 was proposed in 2019. It was not, you see, get so much popularity than BERT, GPT-2, T5, GPT-3, and in 22, GPT 3.5, and then 4, 2023, GPT 4 was released. Now GPT 5 has also been released. So at vertical axis, you see the number of parameters 10 to the power 12. These are the number of parameters. Actually, the parameter are the weights, as we just discussed earlier. So in human brain, it is estimated, not exact number, that number of connection between the neurons are known as parameters are 10 to the power 14, whereas ChatGPT is at 10 to the power 12. And this borderline here, you see the 10 to the power 11 is a RAM. Okay, we have developed, let's suppose, a ChatGPT 4, and ChatGPT 4 has more than maybe 10 to the power 12 number of parameters. So how much text it required to train this GPT-4? Here you see the all human written text, it is also estimated 10 to the power 13, whereas GPT was trained at more than 10 to the power 12, maybe 10 to the power 12.5 or something. Okay. So at this text, when the GPT model was trained, the large language model was trained, then it is obvious that the probability of getting the accurate result is also high. Nowadays, whenever you write a prompt on GPT, and then you see the results are not so bad. These are acceptable. Maybe sometime it exaggerates, but overall, if we see the results are not bad. These are acceptable at least. And when we have these number of parameters, more than 10 to the power 12 number of parameters, and the input, the data size is also large, and then there must be some price to train the model. So here you see that the price to train the model, the GPT-4 price was in US dollar 10 to the power around more than 10 to the power 7 in 2023, even when it was trained. So this cost was paid by the OpenAI, and then OpenAI is now earning, and you all know about the Sam Altman as well, the CEO of OpenAI. And once he was fired from a CEO position, then again rehired. So okay, it's their matter, but after all, the process of GPT is very smooth, and the people are using it, and it's creating a lot of problem for the academician as well. So let's see that how the journal, specifically the journal publishers have adopted the policy of these large language models. Hopefully your university has also the policy about the generative text, but our one has the policy about the generative text. Okay, now we have started from the language model, then about the development of language model, then some about the large language models, and now we came to the point about the generative AI. So what's the generative AI? Generative means the create a new content in the form of audio, code, images, text, video, etc. Nowadays, if we can't see very carefully about the content, so we can't even identify either it is AI generated or real one. So generative is the creation of a new content. The content might be in audio, code, images. Code means computer code, etc. Images, text, video, and artificial intelligence, because this is generative AI. So automatically using a computer program. So it means that the content is being generated automatically. Whatever the instruction we are given to the model or to the prompt we are given to the generative AI. So generative AI concept is not new. Okay, as we all aware about the even smartphone. In smartphone, the built-in facility is available. You set the alarm using using a natural language. So I have an Alexa device. So Alexa is also performing very well. So you ask to play
music, you ask to play a news, or the remembering, some task, assign some task about the recall, etc. So it's performing perfectly. So even smartphone has this facility that, let's suppose this person has set an alarm at 8 a.m. tomorrow morning. So the response is that, okay, your alarm is set. So the next, what are my alarms? You have an alarm at 8 a.m. So it is actually responding. Whatever the instruction is being provided to the model, or to the smartphone, or to the app, so it is responding accordingly. So this is also a small, you see, the a version of a generative AI, that we are just conversation, we are having conversation with the phone, or with the smartphone, or with the app, so it is responding. And next, generative AI, a concept. Whenever we write something at Google, you see, Google give you some suggestion. Let's suppose someone has written San, and then San Francisco weather, San Francisco Giants, Valleys, State University, hostel, etc. So these are the suggestions. So how Google know that these are related to this San? Because a lot of people are searching the content. So based on the previous searches, based on the previous, you see, the history. So these are the the most frequent searches the people were using. Recently, I was reading an article in which GPT, OpenAI, asked that, okay, soon we will release some chats or conversation people are doing with GPT. So people are now, you see, being very careful to talk with GPT, but they decided that they will disclose some information. Let's see. Usually at the end of the year, you see, the Google actually releases the data that what type of searches the people, the country, every country it has. Usually Pakistani, as you all know, that the Pakistani search content are maybe the famous dishes, the famous restaurants, etc. But there are very few technical, you see, the topics which Pakistani use to search. So it is unfortunate, but this is a reality. So similarly, whenever you write some text at a mobile phone, where you also see some suggestions about from the mobile phone, or from the model. So actually, what has changed? The first change, we have seen that ChatGPT, or generative AI, was trained on a huge amount of data, with huge amount of parameter, with huge amount of money they have spent to create the model. So article was published in Tech. So OpenAI announced GPT-4 claims it can beat 90% of humans on the set. So it means that GPT yet didn't reach the human intelligence level, but they have achieved their claim. Their claim may not be, I think, false. The GPT is beating 90% of the human on some standard tests. So the motherboard tech by voice. So the new GPT-4 AI gets top marks in law, medical exam, OpenAI claims. Okay? So one of my PhD is working on this law and FIRs. He was interested to work on NLP, natural language processing, and he worked on a abstractive summarization of a text and then followed by the classification. So actually yesterday I was just reading a newspaper in which Chief Justice of Pakistan has also mentioned that we are not utilizing extensively the AI, the power potential of AI. So actually I think they have decided to use the AI to get benefit from AI. So let's see when they use and then they disclose that this was generated by AI, etc. So now the question is that models are available, generative AI models are available, and how we get benefit from those models. Either we use those models in positive sense or in negative, it depends. However, the question is that how we get benefit from
the generative models. The first one is that we use these models for a brainstorm of a research question, keyword generation, search strategies, etc. So for those Copilot, Microsoft built in, I'm sure you are using a Copilot as well. So ChatGPT, Google Gemini, and Claude, these are the tools which are excellently working. And for your information, one of my undergrad student is working in Gemini. So he's working in Google, and he was also very interested to work in NLP in his undergrad final year project. He also participated in one of the international universities competition. And he was working on NLP, and then after that he joined some industries, and now he's in Google. So he is working, he offered me, sir, I can give you the Gemini, the ID and password for a pro version. So I said, okay, whenever I required, I will ask you for it. So we can use the generative AI model for a literature discovery. One of the tool for the literature discovery I have utilized here as a case study. I will show that how we use it and how we get benefit from that. And literature discovery and synthesis findings. So site assistant, elicit, size, space, etc. So these are not the whole tool. These are just some sample tools which are being utilized for the technical writing. So we need to strengthen our research work. So we need to find the research gaps. So without finding the research gap and without finding without selecting the correct, the model, the parameters, the research always remain, unfulfilled. We need to write a research or do a research that is impactful, that need to transform or change our society and solve the local problems as well. So some of the AI tools here, you can see that the Elicit, Claude, Petal, Reader, OpenAI, Gemini, etc. These are the research tools, the Gen AI tools that are being extensively used for the technical writings. So I have included as a case study the Elicit tool, which I will show you in just in maybe after 2 to 3 slides. The AI tools for summarizing. Actually, whenever we do a research, we need to study a literature extensively. So, let's suppose 30, 40 or 50 papers we have read, and we need to summarize, we need to analyze, we need to find the research gaps from those. So we can do it manually, there is no issue, but we can get assistance from AI tools as well, because it will save our time and it will save our energy. That time and energy need to be invested in the depth of the research. Instead, just we spend the whole time in literature discovery, and then at the end we couldn't solve any solid problem which we were assumed to solve that. So Elicit is included, the chatbots also available, so the AI and document, the Petal, etc. these are available. The Elicit tool we will be discussing here. Elicit is a generative AI tool, elicit.com. So it has a free version as well and paid as a premium as well. So whatever you can afford, you utilize it. So they have claimed, the Elicit is claiming that any paper you uploaded to Elicit are private to your account. So it means that let's suppose you have uploaded your research papers to find some research gaps, and then the Elicit will not disclose those research paper to others. So it's your property, and they claim, and they are fulfilling it. I'm sure about it. At backend, this is a front end, it's Elicit. At back end, so they are using the GPT-3 model. Maybe now they are using GPT-4. The corpus is Semantic Scholar.
we all know about the semantic scholar. So the corpus is semantic scholar. They are feeding it to GPT, and then the illicit is, you see, have some dashboards, some output or some tabular format in which the illicit display the results, findings, and the gaps, etc. So the free version, if you utilize the illicit free version, then it extract 50 papers from the semantic scholar, and it analyze 10 most relevant paper from those 50 papers. So if you have downloaded your paper, and then you can upload the PDF as well. So there is no issue that the illicit will analyze those papers as well in the form of PDF. So here is some of the, you see the illustration where the prompt was, what are the economic impacts of water scarcity in Africa? So this was the prompt. So the illicit explored the semantic scholar, and in which it obtained the top 10 research papers, and this is the research paper title, summary, main findings, and some other parameters as well. So if you need to add some or filter some results, the filter is also available. So I will also show an example of case study of that. I have just completed day before yesterday. I will show it to you. So you can add some more columns. These are the options: main finding, methodology, intervention, outcome, your limitation, etc. So you can add and delete columns. So it's up to you. But if you have a premium version, then more options are available. But at a free of cost version, it has limited. You see the options which can be utilized for the research gaps, etc. So these summary findings, we have also discussed that we need to select the parameter and then add to the table. So these are the some of the parameters: methodology, intervention, outcome, study design, algorithm, organism, software, etc. All of these parameters are given. It depends upon your subject, your research. You see the interest and your prompt. So these can be included as a column. So every paper, let's suppose you want to find what were the statistical techniques, let's suppose they utilize. So you can add a column, and then every paper the illicit analyzed, they give you the statistical technique the scientist utilized it. Okay, these are the just columns. You can utilize it, you can add it, and you can upload your PDF as well. So actually every tool has some pros and cons. The pros are that the connections to Zetro citation software, bulk uploads PDFs, summarizes multiple paper, promises PDF privacy. So these are the pros. The cons are the can't export without plus version. So if you need to analyze you see the papers and the literature, so you can't export it without a subscription, and most interaction cost credits, some lack of transparency. So its cost is as minimum $10 per month, but it may exceeds it. It may depends upon the queries or the prompt you are given to the illicit. So the cost may increase, but it's a minimum that $10 per month you need to pay. Let me show you an example. I've just added the prompt. The prompt was use of NLP and law to solve the criminal cases. So this was the prompt I have given to the illicit. And illicit then written this text about the abstract paper set,
screening. Okay, the NLP, the screening criteria was the NLP criminal law application, practical implementation, effectiveness measurement, legal document analysis, etc. So the data extraction, the methodologies, that how which methodology, let's suppose the bidirectional LSTM and pre-trained word embedding and soft voting ensemble method they utilized. So these are the just examples which are utilized in the research papers. So data sources, it also specifies the data sources, let's suppose the Brazilian, Thai, the criminal charges of homicide, criminal charges, etc. What were the type of the crimes it included in the paper? So it also identified those. Let me show you the table of machine learning model performance, extract key performance matrices of NLP approach. NLP stands for natural language processing. So F1 score, the performance matrices were used: accuracy, precision, recall. So the acceptable responses were the by LSTM F score, average F1 score, the LSTM specific 76, gated recurring GRU, gated recurring unit. So these were the, you see, the algorithm, the techniques, the model they have utilized for the for solving those problems. So usually in law cases, as my PhD student also faced the problem of data secrecy, that some cases were very rare, and the model, at least the machine, those who know about the machine learning models or deep learning models, they know better that we need a large data to train our model. So due to that less number of samples, the problem was that it was not the model was not you see the getting trained over the very small amount of data about some specific cases. So here it also specified that that for a data secrecy problem, they utilize the SIMOD technique, synthetic minority oversampling technique. So it is a technique to oversample the data so that the model at least have some reasonable amount of data for the training. And the legal prediction outcome, etc. Now coming to the table. So these are the columns I have just added. The study, this was a research paper, it extracted. Study focus was the fireman involvement classification of violent crime court records, and legal system type of US Washington state criminal, natural language processing approach and decision tree and key term search. And then accuracy measure, they utilize the F1 score, the key term recall, and F1 score. And then full text retrieved. It means that from the literature, from the website. So it didn't retrieve the full text. Maybe it retrieved, but it displayed that it is not retrieved because it has some limitations. If they write here that the illicit retrieved that paper, then illicit need to pay to the respective publisher. That's why I think they didn't mention here. Otherwise, how they decide and how the illicit decided that the C entry was used, the result, the F1 score, accuracy, recall was this. So it is, I think, difficult. So they just didn't show here, written here that the full text was retrieved. Another paper, study focus for the legal outcome prediction for the homicide Thai penal code. And the legal system or Thailand criminal, natural language processing, they utilize these techniques: bidirectional long short-term memory, LSTM, SIMOD, and pre-trained embedding. The word pre-trained is again and again repeating. Let me explain about some pre-trained. Actually, pre-trained is that the system, let's suppose GPT, is trained on a very large amount of data. There are many models of you see about the generative AI. So if we are solving some small scale problem, so we don't have access to the large amount of data, and we don't have access to the computational power as well. So then how we solve the problem? Either we use the existing techniques, or we train our new large language model. For development of new large language model, it is very difficult.
Then we utilize the pre-trained model. Pre-trained means that the existing model who were trained on a large amount of data. So those model has been utilized. There are various ways to utilize the model, but those model has been you see the parameters were adjusted according to our needs and requirement. So this term is known as the transfer learning. So we perform the transfer learning. Transfer means that existing knowledge has been utilized to solve a new problem. The transfer learning and even deep neural networks, so those who are using it, is very common. So people are solving a very complex problem using a transfer learning because the model was trained on a large amount of data and very reliable and robust. So we need to take advantage of that data, to advantage of that model to solve a new, you see, maybe the same domain or maybe from a different domain model. And similarly the other one. So if, let's suppose, this amount of data, this amount of analysis we have, then it will be very easy to decide a researcher that what are the research gaps. Even this Elicit also describes some research gaps, that these are the, let's suppose, 1, 2, 3, 4 research gaps. Secondly, there is another option of Elicit. You can even talk to Elicit about some specific paper. You just ask a question to Elicit and it will answer to you. So one of my undergrad student also performed a semester project of lab, so in which he developed a generative model using pre-trained and transfer learning to automate the examination system. Automate means in the sense of that he trained up some GPT model at the back end using the exam rules and regulation. So now we can conversate with it, with the model, that let's suppose what are the warning criteria, what are the passing criteria, etc. So it is responding effective. So the people are using the power of the existing models, pre-trained model, and transforming it to solve a new problem. So similarly, as I talked earlier, that you can talk to the model, to the Elicit, related to any specific paper as well. Here we see that the Merchant and Pandey, so legal text summarization and Indian civil or criminal code. So actually these are the detail. This document was provided by the Elicit. Or keeping in mind that I utilize the free of cost version. So if you are interested, you can utilize the free of cost version as well. Yeah, Miss, if you have a question, it's up to you. You can ask in between, but you can ask after the session as well. As you are referring to this software, Yeah. so does it choose specific kind of text? For instance, if all the information is there and all the information is somehow set in headings or the proper words have been used, तब वो डिस्ट्रैक्ट करेगा और उस डेटा को ये मेथोडोलॉजी है, ये सिंथेटिक फ्रेमवर्क है, इसमें कोई लिमिटेशन या स्पेसिफिकेशन है या हाउ स्मार्ट इट इज? मिस, जो इलिसिट है, इलिसिट इज स्मार्ट इनफ, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड, इट डिपेंड्स दैट कितना अच्छा प्रॉम्प्ट आप उसको देते हैं, ठीक है. जितना अच्छा प्रॉम्प्ट होगा उतने अच्छे. इवन इट कैन आल्सो असेस द क्वालिटी ऑफ प्रॉम्प्ट, that you can improve your prompt. This prompt is very, you see, the very generalized, make it specific. So it depends. Prompt अच्छा देंगी तो आपको जिस तरह usually we establish the research questions. So research question might be your prompt. So you give it prompt to the Elicit, and Elicit will find some literature for you, and then pros, cons, advantages, the methodology utilized. And after that, you even, let's suppose you select a paper and then you talk to Elicit specific to that paper as well. So it depends. Actually, prompt जितना अच्छा होगा उतने अच्छे results. And does it give the suggestions about prompt as well or not?
Yeah, actually, whenever you write the illicit, the prompt at illicit, it also assesses its quality, that how better your prompt is. ठीक है, तो उस पर 3-4 ऑप्शन आती है, जब उस पर ग्रीन ऑप्शन आती है, इट मीन दैट योर प्रॉम्प्ट इज परफेक्ट एंड एक्सीलेंट. तो जितना अच्छा प्रॉम्प्ट होगा उतने अच्छे रिजल्ट्स. What do you mean by the lack of transparency? Yeah, lack of transparency mean that actually at back end, as I have just mentioned that I was reading an article in which OpenAI mentioned that we are going to disclose some of the data. So maybe after some time, the illicit may also decide that okay, we are now changing our policy and opening, disclosing some data. So that's why we are not sure that when they change this policy. So far it's on Yes. commercial basis, right? If you get the full subscription, then the whole test is retrieved and will give you the best results. And if you are resting on the free version or like that. नो मिस, एक्चुअली अगर आप फ्री वर्जन यूज़ करती हैं या आप पेड वर्जन, फ्री वर्जन में ये कि आपको जस्ट 10 पेपर्स एनालाइज करके देगा. जो प्रीमियम है उसमें आपको 50-60, इट डिपेंड्स, वो आपको देगा. और बाकी इसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो सेम है. लेट्स सपोज उसकी जो डिस्क्लोजर पॉलिसी है वो सेम. अच्छा जी, अब now coming toward the very important the publisher policies. ठीक है, अच्छा प्रॉम्प्ट हमने दे दिया, अच्छे रिजल्ट्स आ गए. इवन के मेरे एक कोलीग हैं, उनने मुझे कहा, कहते सर मैं ना आज, ये एग्ज़ाम हमारे हो गए थे, सेमेस्टर क्लोज हो गया था, उसके बाद कहते मैं ना आज एक दिन में एक रिसर्च पेपर लिखना चाह रहा हूँ. चले, मैंने कहा ट्राई कर लें. कहते मैं 100% GPT यूज़ कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ लेट्स सपोज उसमें क्या क्या होगा. ठीक है, तो उसने मेरे ख्याल में कि 3-4 आवर्स के बाद जब हम दोबारा हमने टी ब्रेक पर इकट्ठे हुए, कहें सर पेपर इज़ रेडी. मैंने कहा सर ओके, अब इसको सबमिट करना है. कहता है नहीं, रिस्क नहीं ले सकता. ठीक है, जस्ट उसने कहा बैठा हूँ. तो यानी जितना अच्छा प्रॉम्प्ट आप देते जाएँ उतने अच्छे रिजल्ट हैं. लेकिन उससे उन्होंने एक और बात की, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, कि जो रिजल्ट्स हैं ना, उनकी जो डिस्कशन है वो जीपीटी नहीं कर पा रहा. कि आपकी जो मेथडोलॉजी है, जो आपने जो अचीव किया, या आप लेट्स सपोज आपकी इंटेंशन थी जो अचीव करने की, वो नहीं कर रहा. लिटरेचर बड़ा अच्छा करके दे देगा आपको, जो बाकी जो यानी उसका जो इंट्रोडक्शन भी बहुत आउटस्टैंडिंग लिख कर दे देगा. लेकिन वो जो पार्ट है दैट इज मेथडोलॉजी, क्योंकि वो प्योरली आपकी अपनी डेवलप करता है वो. और उसके बाद उसकी जो एनालिसिस है उसमें कहता है कभी ये इसने अच्छा नहीं किया. मतलब ये उनकी थी, और मैंने यूज़ नहीं किया रिसर्च पेपर के लिए. वैसे तो प्रॉम्प्ट तो बंदा यूज़ कर ही लेता है, बट उसके लिए यूज़ नहीं किया. सो वी वर डिस्कसिंग हियर द पब्लिशर पॉलिसीज अबाउट द यूज़ ऑफ जनरेटिव एआई. साइंस, जिस तरह हम सबको पता है कि सबसे बड़ा पब्लिशर, और उसके बाद इसके जो रिसर्च पेपर हैं उसकी क्वालिटी भी है. लेकिन इसके रिसर्च पेपर में in back in 2022 if I'm not wrong, जापानीज प्रोफेसर एक ने सुसाइड किया था, और पेपर उसका पब्लिश हुआ था साइंस में. और उसके जो रिजल्ट्स थे, किसी प्रोफेसर ने उसको रिप्रोड्यूस किया 1, 2, 3, 4 टाइम, और वो रिज़ल्ट वो नहीं आए जो उसने मेंशन किए हुए थे. और उसने फिर रिपोर्ट किया. रिपोर्ट होने के बाद फिर उसकी एक्सप्लेनेशन हुई, और उसके बाद उसने सुसाइड किया. लेकिन उससे पहले उसने कहा कि मेरा पीएचडी स्टूडेंट था, और उसने मुझे आकर ये अपडेट करता रहा, भाई ये रिजल्ट्स हैं. हाँ, मेरी मिस्टेक ये थी कि एग्जैक्टली मैंने उसको जाकर ख़ुद क्रॉस वेरीफाई नहीं किया. ठीक, तो बहरहाल साइंस की पॉलिसी है द एडॉप्शन ऑफ ChatGPT एंड रिलेटेड LLMs टू सपोर्ट रिसर्च एंड जनरेट स्कॉलरली कंटेंट कंटिन्यूज टू एक्सप्लोइट. ये तो एक फैक्ट है जो कि हम वी आर अनेबल टू डिनाई. The policy for the science family of journals have been to use these tools and research is acceptable as long as proper disclosure appears in the method section. ठीक है, प्रॉपरली डिस्क्लोजर के लेट्स वो 2 पैराग्राफ हैं, 3 हैं, 4 हैं, कितने आपने यूज़ किए हैं और कौन सा टूल यूज़ किया है. ठीक है, डिस्क्लोजर करना ज़रूरी है. अब आप ये इमेजिन करें, अगर किसी के रिसर्च पेपर में
ये डिस्क्लोजर साथ में लगा हो कि इसने लेट्स सपोज एक सेक्शन 2 पैराग्राफ है, 3 है, 4 है, वो उसने किसी जन एआई से उसने जब लिखे हैं तो उसका इम्पेक्ट क्या होगा। एज ए रिसर्चर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसका इम्पेक्ट क्या होगा। लोग क्या कहेंगे कि 2 पैराग्राफ ही नहीं लिख सकता, ये किस तरह का साइंटिस्ट या रिसर्चर। ठीक है, तो उन्हें परमिशन तो दे दी। अब ये एक बड़ा रिस्की है, अभी तक मैंने नहीं देखा किसी ने कोई किसी का ऊपर डिस्क्लोजर करके लिखा हो ये मैंने लेट्स सपोज जो लेंस है उनसे यूज़ किया। हाँ, कुछ इलस्ट्रेशंस के लिए था, लेट्स सपोज कुछ ऐसे केसेस होते हैं बाद पर जो रियल पिक्चर्स पे मतलब या जो इमेजेस हैं वो लोग नहीं मतलब अलाउ करते, उन केसेस में हो सकता है। Because if you are clearing some findings and recommendations, you have to tell parent about that you do this kind of software. जी बिल्कुल, In the end, it will save the author. बिल्कुल ऐसे, there is no doubt. So the science journals have now adopted our editorial policies, images and text integrity to include the following declaration statement. ठीक है, तो वो पूरी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट मेंशन करना होगी कि इसका ये कंपोनेंट फ्ला टूल से फ्ला इस तरह आपने इसको यूज़ किया। ठीक है, विदाउट दैट तो उसकी फिर जो है ना वर्थ नहीं होगी, वो फिर प्लेजराइज्ड फॉर्मेट में आ जाएगा। सो प्लेजरिज्म के रिलेटेड तो आपको बेहतर पता है कि भाई किस तरह से हैं। बहुत सारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे प्रोफेसर्स के, और कुछ ऐसे प्रोफेसर्स भी हैं जो मैं अभी किसी का देख रहा था, इस वक्त तक मेरे ख्याल में मोर दैन 60 पेपर यानी 1 साल में पब्लिश हो चुके हैं। अब वो मैं ख़ुद भी सोच रहा था कि भाई हम भी रिसर्च करते हैं लेकिन इतनी कैपेसिटी नहीं है हमारी कि हम 60 तक जा सकें। और इट डिपेंड्स, मतलब कुछ फील्ड्स में हो सकता है। और जिसकी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये इज़ इन कंप्यूटिंग फील्ड। कंप्यूटिंग में चूँकि मैं ख़ुद भी अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। चलें, अच्छा, अब एल्सफेयर, जिस तरह एल्सफेयर के जितने जर्नल्स हैं सारे पब्लिशर एक ही है ऊपर एल्सफेयर, और जर्नल्स फिर मुख्तलिफ हैं। द पॉलिसी ओनली रेफर टू द राइटिंग प्रोसेस एंड नॉट टू यूज़ द AI टूल्स टू एनालाइज एंड ड्रा इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा एज पार्ट ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। अब उन्होंने कहा कि आप इसके राइटिंग प्रोसेस में कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो एनालिसिस है, उसकी इनसाइट्स हैं, वो आप GPT से नहीं जनरेट कर सकते। ठीक है, अच्छा, ऑथर शुड डिस्क्लोज in their manuscript the use of AI and AI assisted technologies and statement will appear in the published work. ठीक है, जो जो पार्ट में यूज़ किया वो मेंशन करना है कि भाई ये हमने किया। थर्ड पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द ऑथर शुडंट लिस्ट द AI and AI assisted technologies as an author or a co-author, nor cite AI as an author। ठीक है, यानी ऑथर एंड को-ऑथर ये नहीं हो सकता, और ये जितने जर्नल्स हैं सबकी यही पॉलिसी है कि ऑथर और को-ऑथर नहीं हो सकता। हाँ, उसे आप कुछ पार्ट आप लिखवा सकते हैं बट उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज करना होगा, और उसके बाद ये है कि उसको रीज़न बताना होगा कि आपने ये क्यों यूज़ किया। अच्छा, द ऑथर्स आर अलाउड टू यूज़ द जनरेटिव AI and AI assisted technologies in writing process before submission, but only to improve the language and readability। ठीक है, एल्सवेयर की क्या है, लैंग्वेज एंड रीडेबिलिटी को आप इम्प्रूव करा सकते हैं, बट इसके लिए भी एक प्रॉब्लम है। केस स्टडी मैंने ऐड की हुई है, आई विल डिस्कस द केस स्टडी विद यू। तो उसमें भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम हैं। वो जब आप करते हैं उसको, लेट्स सपोज आपने लैंग्वेज इम्प्रूव कराई, वो कॉपी पेस्ट करके उसमें डाला, वो सारा AI जनरेटेड आ गया, उसका फिर अपना मसला है। वो AI कंटेंट AI में आ जाता है, वो चूँकि उससे पास हो चुका है ना एक दफ़ा, लेकिन उसके लिए यूजुअली ये किया जाता है कि जो आपकी जो इम्प्रूवमेंट है, जो वो सजेस्ट करे, तो उसको फिर आप उसको चेंज करें अपने टेक्स्ट में, ना कि उसको कॉपी करके वहाँ पेस्ट करें। यस, अगर फर्ज करें हमने कोई एक स्टेटमेंट एक करंट आता है उसको रीड करके प्रोफेशनल लैंग्वेज में देता है, we do not copy paste it, we just write it, will it capture or not? एक ही बात है। जब वो ह्यूमनाइज हो जाता है, मिस आजकल ह्यूमनाइज के भी बहुत सारे, वो भी तो AI ही जनरेट करके दे रहे हैं। हाँ, वो मिस उससे फ़र्क नहीं पड़ता, टेक्स्ट तो वही है, टेक्स्ट वही है ना, तो वो टेक्स्ट से वो उसको देख रहा होता है। अच्छा, को-ऑथर एंड ऑथर नहीं हो सकता, ये क्लियर है। और एल्सफेयर की ये स्टेटमेंट है कि आपने इस तरह से लिखा, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ दिस वर्क द ऑथर्स यूज्ड नेम ऑफ द टूल
सर्विस इन ऑर्डर टू रीजन, ठीक है, रीजन की भी क्यों क्यों किस पर्पस के लिए यूज़ किया. आफ्टर यूजिंग द टूल एंड सर्विस द ऑथर्स रिव्यूड एंड एडिटेड द कंटेंट एज नीडेड दिस. ठीक है, ये एक्सप्लिसिटली मेंशन करना होगा अपने मैन्युस्क्रिप्ट में, अदरवाइज फिर वो उसी कंटेंट में जाएगा फॉर द यूज़ ऑफ जनरेटेड एआई. अच्छा, जिस तरह स्पेलिंग, रेफरेंसेस, ग्रामर, जिस तरह आप लेट्स सपोज वर्ड में लिखते हैं तो उसमें आपको सजेशन दे रहा होता है, वो इसमें शामिल नहीं है. वो आप लिख सकते हैं कोई मसला नहीं. IEEE जी जैसे फॉर ग्रामर चेक, ग्रामरली है या फेक कोड है, Yeah. ये बात तक आपको अगर आप उनको दो वर्ड्स देंगे आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इस तरह से फिगर जो है ना वो रिप्लेस करें, वो नहीं करना, वो नहीं करना, वो उसी की मैंने एग्जांपल पे आपके स्टडी के तौर पर इंक्लूड की. ओके, IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो इसने कहा कि ऑथर्स मस्ट डिस्क्लोज द यूज ऑफ AI जनरेटेड कंटेंट, टेक्स्ट, फिगर्स, इमेजेस, कोड in acknowledgement section for their submission. Specific AI systems used and the sections where AI should be applied should be identified. यानी आपने डिस्क्लोज करना है कि भाई कहाँ पर आपने लिखा. ठीक है. अच्छा, अब द ग्रामर एनहेंसमेंट वगैरह के लिए कोई इशू नहीं है. इसका भी IEEE की भी पॉलिसी है कि भाई आप इसको एज ए ऑथर एंड को ऑथर यू कांट साइट दिस जो AI असिस्टेड टेक्निक्स. स्प्रिंगर ऑथरशिप के लिए तो जैसे आपको बता रहा था, एवरी पब्लिशर इज क्लियर दैट AI tools can't be listed as an author or co-author, and disclosure use of LLMs should be documented in method section or suitable alternate part of the manuscript usually. ठीक है, या तो आप आखिर में लिख देते हैं एक्नॉलेजमेंट में या डिस्क्लोजर में या उससे पहले. So LLMs यानी large language models should not be listed as an author. ह्यूमन ऑथरशिप इज रिक्वायर्ड फॉर दी अकाउंटेबिलिटी. अब ये क्यों नहीं है उसने रीज़न भी आगे बता दी, बिकॉज अब अगर LLM ने कोई चीज़ ऐसी बता दी है वो उसको कौन अकाउंटेबल करेगा, तो उसको कोई नहीं पूछ सकता ना उससे भी. ठीक है, उससे जो लिख दिया. ठीक है. और रिसेंटली जो ग्रोक है, एक्स का जो प्लेटफॉर्म है, आप शायद सोशल मीडिया यूज़ करते हैं एक्स का, तो उसका है ग्रोक, एलन मस्क ने जो रिपोर्ट किया उसमें एक कंट्रोवर्सी फैली और उस पर उसको काफ़ी जो है ना प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है. ठीक है, वो कंट्रोवर्सी आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं. तो यूजिंग सम स्पेसिफिक कंट्री उसके रिलेटेड कोई था तो उसने कर दी. सो टेलर एंड फ्रांसिस की एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल चाहे GPT डू नॉट स्पेसिफाई ऑथरशिप क्राइटेरिया. क्लियर है, डिस्क्लोज करना है आपने जो भी आपने जहाँ भी उसको यूज़ किया उसकी डिस्क्लोजर उसका बहुत ज़रूरी है. So author should not submit manuscript where generative AI tool has been used to weigh the replace co-researcher and author responsibilities. For example, text or code generation without rigorous revision, synthetic data generation of any type of content which is inaccurate, including abstracts or supplemental material. ठीक है, तो यानी अगर हम इसको समराइज करें तो GPT को आप सिर्फ ग्रामर और जो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट और स्पेलिंग वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं. अगर किसी दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ करें दैन यू नीड टू डिस्क्लोज दैट प्रॉपरली. डिस्क्लोजर स्टेटमेंट भी आपको मेंशन करना होगा. अच्छा, नाउ कमिंग टुवर्ड द केस स्टडी. वन केस स्टडी जो कि मेरा PhD स्टूडेंट है, अभी उसकी शायद इसी मे बी सितंबर में उसका हम डिफेंस करवा लें. उसने ग्रामरली का प्रो वर्जन यूज़ कर रहा था और उसने मतलब मुझे बाद में बताया, उसने कहा कि मैंने सर ग्रामरली का जो वर्ड के साथ इम्बेड हो जाती है उसमें पूरा जो लेट्स वो पैराग्राफ है या पूरा सेंटेंस है, कह रहा था ये जो आपने लिखा इससे बेहतर सेंटेंस ये है, अगर आप कहते हैं तो इसको इम्प्रूव. वो ऐड करता गया, उसे करता गया. तो आखिर में जब उसका लिखा AI कंटेंट वाज 64%, वेयर जो दूसरी जो उसके पास जो सिमिलरिटी थी वो मे बी 3 to 4%. अब इस 64 की वजह से उसको दोबारा ये रिफ्रेश करना पड़ा और दोबारा ये इसको रीराइट करना पड़ा और उसके लिए उसके 2 to 3 वीक्स स्पेंड हुए. और फिर मुझे कहता है सर वो क्वालिटी नहीं आई जो कि एक्चुअली मैं लिखना चाह रहा था. ठीक है, तो इसलिए जो ग्रामरली वगैरह है सेंटेंस को या आप कह के पूरे पैराग्राफ को रिप्लेस ना करवाएं. आपने क्या करना है, अगर कोई लेट्स सपोज कोई ग्रामेटिकल दे रहा है किसी जगह पर, आप अंडरस्टैंड करते हैं भाई ये ठीक है, उसको कर सकते हैं, उसका वो मेंशन नहीं होगा, उसकी डिस्क्लोजर की भी ज़रूरत नहीं है.
बट अगर पूरा सेंटेंस रिप्लेस होगा, पूरा पैराग्राफ रिप्लेस होगा, तो फिर ये 64% आपके सामने है। और ये मैंने उसको टर्नटेन से चेक करके दिया था 64%। तो उसके बाद वो काफ़ी डिप्रेशन में भी चला गया, उसने कहा तो मेरी गलती होगी। मैंने कहा ठीक है, अब तो कॉन्सिक्वेंसेज उसको, तो उसको मैंने उसका टाइम बहुत ज़्यादा इस पर स्पेंड हो गया। मीन्स यूजुअली हाँ, because normally they suggest that you should be opting for these kind of apps to improve your manuscript. या उसमें मैं इस इम्प्रूवमेंट के इस तरह मैं डिस्कस कर चुका। देयर आर वेज टू इम्प्रूव द मैन्युस्क्रिप्ट, द ग्रामर। अगर आप पूरे का पूरा उसको लेट्स सपोज एक पेपर दे देती हैं, आप कहती हैं पूरे का पूरा मुझे रीराइट करके दे या इसको इम्प्रूव करके दे, तो उसके बाद तो वो यानी जनरेटिव एआई से पास होकर आया, वो तो फिर उसी में कंटेंट में जाएगा। और कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो कि जनरेटिव एआई का इस लेवल तक लेट्स सपोज 64% तक एक्सेप्ट कर रहा हो। कुछ है इसमें फॉल्स पॉजिटिव भी काफ़ी सारे मतलब होते हैं। फॉल्स पॉजिटिव जो टर्नटेन है वो खुद कहता है कि इसमें फॉल्स पॉजिटिव के चांसेस हैं, बट बिलो मेरे ख्याल में शायद कोई 18 या 17% अगर है तो दैट्स फाइन। ये डिपेंड करता है कि भाई यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी की पॉलिसी क्या है। आपकी यूनिवर्सिटी की पॉलिसी का मुझे नहीं आइडिया, लेकिन यूजुअली अगर 17% से बिलो हो तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है। बहरहाल कोशिश करें कि ये कम से कम जितना हो बेहतर। अच्छा, ओपन एआई के जिस तरह जीपीटी है, डीप सीक है, मतलब उसमें आप ग्रामर करेक्शन और प्रूफ रीडिंग के लिए तो आप यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट जनरेट करते हैं और रिजल्ट्स को। और दूसरा ये है कि उसके लेट्स सपोज जो जर्नल की जो पब्लिशर की जो पॉलिसी है उसको अगर वायलेट करते हैं तो उसके फिर आप देख सकते हैं कि जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो किस तरह से होते हैं। यूजुअली आप खुद भी रिव्यू करते हैं रिसर्च पेपर्स को, मैं भी करता हूँ। उसमें आ रहा होता है कि इसका जो सिमिलैरिटी इंडेक्स है एआई जनरेटेड इतना % है और दूसरा इतना %। और यानी वो आजकल तो जर्नल के जो एडिटर हैं उनका जो यूजुअली वो आईथेंटिकेट एक सॉफ्टवेयर है उससे करते हैं, आई ऑथेंटिकेट से। तो बहरहाल ये वो लिखा आ रहा हो कि भाई कितना कितना कंटेंट है। अगर कंटेंट एक्सेप्टेबल रेंज से एक्सीड कर रही है तो जो एडिटर है वो ही रिटर्न कर देता है, कहता नहीं ये हम नहीं कर सकते, इसको आप इम्प्रूव करें या वट एवर द एडिटर डिसीजन। अच्छा, अब लिमिटेशन में जनरेटिव एआई टूल्स आर एक्सपेंडिंग रैपिडली, so assess the tool the same way you would assess the individual source। ठीक है, तो अब उसके लिए यानी जो भी आप टूल यूज़ करना चाह रहे हैं आप यूज़ कर सकते हैं, बट उसकी कितना यूज़ करना है इसके लिए आपको जो भी जर्नल हो, पब्लिशर हो, उसकी जो ऑथर गाइडलाइन है ये ज़रूर पढ़ें। और मेरी तो रिकमेंडेशन होगी कि जब भी आप कोई रिसर्च पेपर सबमिट करते हैं या आप कोई पब्लिश करने के लिए जो भी जर्नल हो उसकी ऑथर गाइडलाइन ज़रूर देख लें। उसमें क्लियरली लिखा होता है कि भाई ये इतना इतना % चाहिए, इस लेट्स सपोज उनकी रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली भेजेंगे तो उसके जो एडिटर का जो चेक लिस्ट है उसको उसके डेस्क को पास करना आसान होगा। अदरवाइज इट बिकम वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि सबसे बड़ा जो हर्डल है वो एडिटर है, और एडिटर के बाद चीज़ें शायद कोई थोड़ी सी बेहतर हो जाती हैं, बट एडिटर से अगर पास नहीं होगा तो फिर आगे रिव्यू। अच्छा, यूजिंग जेन एआई इन सर्टन वेज फॉर असाइनमेंट्स मे प्रिवेंट यू फ्रॉम लर्निंग एंड लिमिटेड डेवलपिंग योर ओपिनियन एंड एबिलिटी टू कम्युनिकेट योर ओन पर्सपेक्टिव इन योर वर्क। हमारे पास हमारी यूनिवर्सिटी में एक इनवाइट किया था हमने एक स्कॉलर को जो कि वहाँ आए थे, और उसने कहा कहते हैं जनरेटिव एआई को आप यूज़ तो कर रहे होते हैं बट ये जो एबिलिटीज़ हैं उनको, आपकी एबिलिटीज़ को ये अंडरमाइन कर रही होती है। यानी कहता है आपके किसी जहन के माइंड के किसी पार्ट में यानी ये एक अनकॉन्शियसली एक चीज़ पड़ी है और ठीक है जीपीटी से मैं इसको ठीक करा, यानी खुद एफर्ट करने की बजाय जो क्रिएटिविटी है वो नहीं आ रही, और वो माइंड में जो एक है कि ठीक है जीपीटी है या लेट्स सपोज दूसरे टूल्स हैं लाइक जीपीटी, उनसे हम ठीक करवा लेंगे। तो इसलिए इसका यूज़ लिमिटेड करना चाहिए। और हाँ, यहाँ पर एक कंसेप्ट है जस्ट इन टाइम लर्निंग। ठीक है, जस्ट इन टाइम लर्निंग। लेट्स सपोज आपको किसी एक कॉन्सेप्ट है उसका कोई ओवरव्यू लेट्स सपोज लेना हो तो उसके लिए आप उसको कर लें ताकि आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ जाए। बहरहाल इसको यूटिलाइज स्टूडेंट भी कर रहे हैं और फैकल्टी भी कर रही है, इसका यूज़ प्रॉपर यूज़ होना चाहिए।
और हम कंप्यूटिंग के जो भी आप इधर फैकल्टी बैठी है, हम खुद भी जब मेरे अपने कोर्स में या स्टूडेंट एक्सपोज करते हैं किसी असाइनमेंट है या कुछ में, मैं तो उन्हें बुला लेता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है ये कोड आपने मुझे भेजा, ये मैंने डिलीट कर दिया, मुझे लिख कर दिखाओ और इधर रिप्रोड्यूस कर दो। अगर कर सकता है तो दैट्स फाइन, अगर नहीं कर सकता तो फिर, और ये क्लियरली बताता भी हूँ, आप भी बताया करें स्टूडेंट को, क्योंकि आप लेट्स सपोज इसको असेस जब करेंगे उसको इन पैरामीटर रूब्रिक्स पर करेंगे ताकि स्टूडेंट के पास कल कोई ऐसी चीज़ ना हो कि लेट्स सपोज वो कल जाकर कंप्लेंट करे और देखें जी ये टीचर ने मेरे साथ ज्यादती कर ली। ठीक है, तो मैं खुद उन्हें पहले कम्युनिकेट करता हूँ, हर क्लास में उनको बताता भी हूँ, उसके बाद फिर मैं उनके चेक करता हूँ जो असाइनमेंट्स वगैरह, और बुला लेता हूँ स्टूडेंट्स को जो जो लेट्स सपोज मुझे डाउट होता है कि भी इन्होंने काम ठीक उसको नहीं किया या उनकी कैपेसिटी से बढ़कर उन्होंने कर दिया, फिर उनको बुलाता हूँ, कहता हूँ ये मैंने डिलीट किया पोर्शन, चले आप मुझे रिप्रोड्यूस कर दें। और सर ये फिर ऑथेंटिक है इसका, जैसे विकिपीडिया पे स्टूडेंट्स ऐड कर देते हैं डाटा, तो क्या ये ऑथेंटिक है? क्योंकि एक दफ़ा मैंने ChatGPT से पूछा कि आप डाटा कहाँ से लेते हैं, तो उसने यही बताया कि मैं डिफरेंट वेबसाइट से डाटा उठाती हूँ। तो ये फिर ऑथेंटिक तो इसका नहीं है, बुक से नहीं मेरे ख्याल में ये उठाते, वेबसाइट से उठाते हैं या लोगों की चैट से उठाते हैं। ओके मिस, इसमें मैं यहाँ पर ये दिखाया था, जस्ट मैं दोबारा एक ग्राफ आपको दिखा दूँ ना, ये ऑल ह्यूमन रिटन टेक्स्ट जो हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है, एक एस्टीमेट है 10⁻30, ठीक है, और जो GPT-4 अभी GPT-5 आ गया, ये जो ट्रेन हुआ यानी जो मॉडल जिस पर ये ट्रेन हुआ वो हुआ है 10⁻, लेट्स सपोज 12 पॉइंट समथिंग, और जो विकिपीडिया है उसके पास जो है लेट्स सपोज 10⁹ से थोड़ा सा ज़्यादा मतलब। तो इसका मतलब ये कि ये विकिपीडिया को देखता है और वेबसाइट्स को देखता है, इवन बुक्स को देखता है, इवन ये कि आप उसको एक बुक अपलोड कर दें और उससे आप क्वेश्चन आंसरिंग करते रहें, आप उस बुक से आपको वो प्रॉम्प्ट से आप ये तो ऑनलाइन बुक से वहाँ से डाटा लेता है जो अवेलेबल टेक्स्ट हो जी, जो अवेलेबल हो जिन पे हमारी एक्सेस नहीं है, क्योंकि आपको पता है बहुत सी बुक्स हैं ऑनलाइन पढ़ी तो है लेकिन हमारी एक्सेस नहीं है उन पर जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि जैसे हमारी डाटा बेसिस हैं, जापान में हम यूज़ करें तो वो और होती है, पाकिस्तान में यूज़ करें तो वो और होती है, तो क्या ऐसा नहीं है कि ChatGPT भी इसी तरह हो या हमारे लिए मुख्तलिफ बनी हो और उनके लिए मुख्तलिफ हो? नहीं मिस, ऐसा नहीं है। GPT बेसिकली जो अवेलेबल टेक्स्ट है ना उसको ये रिट्रीव करती है, उस पर ये ट्रेन हुई भी है। अब जो लेट्स सपोज 22 में इसको जब लॉन्च किया गया था तो उस वक्त कह रहा था कि मैं आपको कोई 1 से 1.5 ईयर प्रीवियस डेटा आपको दे रहा हूँ। अब जो जेमिनी आया गूगल का या को-पायलट है और या इवन के अब GPT है, कहते हैं नहीं मैं अप टू डेट हूँ। तो इसका मतलब वो जो प्रीवियस डेटा था वो तो उसके पास नॉलेज है ही, और जो न्यू डेटा आ रहा है उसको भी ये अकोमोडेट कर रहा है। मतलब तमाम रीजन्स के लिए सेम? यस सेम। हाँ, जो गूगल है इसको यानी इंटेलिजेंटली थोड़ा सा यूज़ करें तो ये आपको डिफरेंट जो रेपोजिटरीज हैं सर्वर्स पर लेकर जा सकती है। लेट्स सपोज जब मैं कभी सर्च करता हूँ और मुझे कोई थोड़ा सा हाई लेवल का कंटेंट चाहिए तो फिर मैं आप यूजुअली देखें ना google.com देखें तो वो नीचे पाकिस्तान लिखा हुआ है, तो उसको आप कभी लेट्स सपोज किसी दूसरे कंट्री के लिए मैं यूजुअली लिखता हूँ .co.uk, वो करके आप देखें तो फिर आपको जो कंटेंट है वो थोड़ा सा वो बेसिकली ये राउटिंग होती है इनकी, यानी जो हम उसमें हम दे रहे हैं प्रॉम्प्ट हम दे रहे हैं वो जो नियरेस्ट जो उनके जो सर्वर्स हैं उनसे कोऑर्डिनेट करती है और कॉरेस्पॉन्डेंस करती है। और हमारे पास जो मेजॉरिटी डेटा है आपको पता ही है कि वो किस तरह है, रॉ डेटा, ये कोई ख़ास वो नहीं आ रहा। तो फिर अगर कोई हाई लेवल की चीज़ आपने अगर सर्च करनी हो तो उसको फिर .co.uk या किसी और उसका .nl नीदरलैंड का कर दें या किसी का, तो उससे रिजल्ट डिफरेंट होते हैं। ये मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया, गूगल करती है, बट GPT के बारे में ऐसा नहीं, क्योंकि उससे तो पूरा डेटा लिया और डेटा की बेस पर वो पूरा देगा। लेकिन GPT जब डिस्क्लोज अभी करेगी, उसने कहा हम डिस्क्लोज करेंगे कौन क्या सर्च कर रहा है, कौन किस तरह की बातें कर रहा है, तो फिर हमें पता चलेगा। मैं तुमसे पर्सनल बातें शेयर करती हूँ, तुम किसी को बताओगी तो मैं नहीं बताऊंगी। तो अब लेट्स सी, हम देखेंगे कि हम मतलब हमारी नेशन ने क्या पूछा। फलाने मुझसे ये बात की, फलाने वो कहते हैं हाँ गलत
साथ align करना है, how can they be अच्छा मिस, अगर हम देखें ना उनकी, हो सकता है उन्होंने जो टर्म एंड कंडीशन, हम तो नहीं पढ़ते ना, हम यूजुअली बस कह देते हैं ठीक है ओके है एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन हो सकता है उसकी टर्म एंड कंडीशन में लिखा हुआ हो कि हम विद द सर्टन लेट्स सपोज टाइम पीरियड के बाद इसको रिलीज़ करेंगे, हम इसको, ताकि लोग इस पर रिसर्च कर सकें कि भी लोग उनके जो बिहेवियर है उसको देख सकें, उसको यानी ऑब्जर्व कर सकें। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बहरहाल वो जो कि अब रिलीज़ करेगा तो हम देखेंगे कि हमारी जो सर्च थी वो क्या थी और हमारी बातें क्या थी। अच्छा सर, एक बड़ी वो अच्छी बात मैं इन सब से भी शेयर करना चाहूँगी। अपनी ना सीवी जितना भी है वो आप लोग अपलोड कर दें, चैट से दे दे उसको, वर्ड फाइल में से उठा के कॉपी कर देना अपना, वो आपको बड़े अच्छे आइडियाज़ देगी। आपने कभी आपको अपने सेलेक्ट करने पड़ते हैं, गोल सेलेक्ट करने पड़ते हैं, कहीं पर भी कुछ भी, आपको बड़ा अच्छा आपको गाइड करती रहेगी स्टेप बाय स्टेप। आपको क्या किया, अपने गोल सेट करें या आपने ये बड़ा अच्छा, और आपकी सीवी को अच्छा मेंटेन रखेगी, आपकी एक असिस्टेंट आपको मिल जाता है। तो ये मैं अभी गई थी ना ब्रिटिश काउंसिल के टूर पे लंदन, जी जी, वहाँ के एक प्रोफेसर ने मुझे ये बात बताई। वो कहता है कि मैंने अपनी पूरी प्रोफाइल रखी हुई थी और मैं गाहे बगाहे जो भी मेरी अपडेट्स होती हैं उसमें एंटर करता रहता हूँ। तो कहते हैं मेरी नींद आई नहीं, तो उसने कहा कि अपने 3 गोल सेट करके लाए। मैंने एक लम्हा लगाया, मैंने चैट जीपीटी से कहा मेरी 3 गोल तो सेट कर दो। उसने इतने बेहतरीन मेरी प्रोफाइल को देखते हुए, सारी वो मेरे एटीट्यूड हर चीज़ को उसने देखते हुए उसने बड़े अच्छे 3 गोल सेट कर। कहता वो डीन कहती है हर किसी को लेके फिर रहती है, ये देखिए ऐसे गोल सेट कर रहा है ना, ऐसे नहीं ठीक बात है, आप ठीक कह रही हैं। और ख़ासतौर पर अब देखिए ये तो कोई इतना मतलब साइंटिफिक चीज़ है नहीं कि जिसको हम पब्लिश करने जा रहे हैं इस तरह से, तो ये बिल्कुल हम यूज़ कर सकते हैं। और सीवी से लेट्स को किसी का आपको कोई अप्लाई करना है या किसी का कोई लिखना है कोई गोल्स, अपनी सीवी उसको दें। इवन के अभी रिसेंटली एक मेरे पास एक कोई आया, किसी प्रोफेसर ने कांटेक्ट किया, उसने कहा मैंने मैपिंग करनी है ना अपने यूनिवर्सिटी के विजन और मिशन को अपने डिपार्टमेंट से, और उससे मैंने प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स ड्राइव करने हैं, मैं कैसे करूँ। तो वो मैपिंग के रिलेटेड है, वर्ड टू वर्ड और सेंटेंस टू सेंटेंस। मैंने कहा जीपीटी को दें, उससे पूछें कि ये यूनिवर्सिटी का विजन है, ये मेरे डिपार्टमेंट का है, लेट्स सपोज इसको मुझे मैप कर। तो उसने एग्जैक्टली मैप करके दिया, उसको वेरीफाई किया था, परफेक्ट। तो इस तरह से जो आपकी जो प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी कर सकते हैं। यदि पॉजिटिव यूज़ इसका बहुत है, टेक्नोलॉजी है, हमें इसको यूज़ करना चाहिए। लेकिन ख़ास तौर पर ऐसी चीज़ जो कि हमारे नाम के साथ जो अटैच हो जाए उसके लिए हमें बहुत ही केयरफुल होना चाहिए। जिस तरह क्रिएटिविटी में आप मत ले जाना, आपको जो रिसर्च है या क्रिएटिविटी जो है आपकी, उसमें आप ये चीज़ें नहीं ले जाना। फॉर एग्जांपल जैसे हम किसी कंट्री में अप्लाई करते हैं, जैसे आप लोगों ने यूएसए लीडरशिप के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने हमें 3 क्वेश्चंस दिए, तो उसमें वो अगर आप उन क्वेश्चंस के आंसर जो है आप चैट जीपीटी से उठाकर दे देते हैं तो सीधे आप सीधा रिजेक्टेड है। यस ठीक है, ये चीज़ें कुछ भी वेरी केयरफुल रिसर्च में, पब्लिकेशंस में, या जो आपसे पूछा गया उसमें, ठीक है आप अपने असिस्टेंट्स के लिए रखें, अपने पब्लिकेशंस ऐड करते रहें, आपको रेफरेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो आप जब कहेंगे कि मेरी पब्लिकेशन लिस्ट दे दें तो वो आपको सारी आपकी पब्लिकेशन लिस्ट जो है वो उसमें वो प्रोवाइड कर देंगे। मतलब पॉजिटिव न्यूज़ के लिए, जहाँ पे नेगेटिव आएगा वो हर चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें हैं। मोबाइल भी है ना, उसके भी पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी एस्पेक्ट्स हैं, इसके भी पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। एग्री। मेरे एक जूनियर वहाँ पर कोलीग हैं और वो कह रहा था सर मैंने ना अप्लाई करना शुरू कर दिया है फॉर अ फॉरेन स्कॉलरशिप फंडिंग। मैंने कहा दैट्स गुड। तो मैंने कहा आप ये कैसे साइन ऑफ से और इतना आप रोज़ 2-2-3-3 कर रहे थे, कैसे आप उसको मॉडिफाई करते हैं? कहते सर मैंने तो को पायलट यूज़ करता हूँ तो उससे मैं जनरेट करवा लेता हूँ। मैंने कहा फिर आपको आंसर भी को पायलट बनाएगा? तो मैंने कहा कोई एक्सपेक्ट ना करें। तो चले जी, ये हमारे पास है इसकी फीडबैक के रिलेटेड QR कोड है, इसको स्कैन आप कर सकते हैं और इस पर जस्ट 2-3 क्वेश्चंस हैं, उसका आपने आंसर करना है ताकि वो आपको यानी आपकी जो फीडबैक है वो आ सके। जी दोबारा QR कोड से इसको स्कैन कर ले। तो अच्छा, QR कोड ने वैसे काफ़ी ज़िंदगी आसान बना दी है और अभी भी मैडम के पास तो आते होंगे HEC और उनसे
उन पर अभी भी वो इतना बड़ा लिंक लिखा होता है, पता नहीं क्या 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 वो करना, तो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो आप भी जब भी अपनी कोई चीज़ यूज़ करें, पोस्टर वगैरह, QR कोड दे दें तो उससे ज़िंदगी आसान। ये जो फीडबैक परफॉर्मा ये आप लोग फिल करेंगे जी। तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और ये ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये पॉजिटिव प्लस पॉइंट है हमारे वर्कशॉप का। Sir, I have another question. जी मिस प्लीज। These apps, boards and boards, do they have leading personality? Because recently we heard that parents went into the boards and they sued ChatGPT because their son did suicide. So, international legal regime में क्या status है? मिस ये बिल्कुल अभी रिसेंटली ये केस रिपोर्ट हुआ है, और उस पर मेरे ख्याल में भी केस चल रहा है कि उसका डिसीजन नहीं आया, लेकिन जीपीटी ही था, और जीपीटी ने कहा कि हम इस एस्पेक्ट को देख रहे हैं इसके कि भी हम लेट्स सपोज हो सकता है कि वो अगर कोई इस तरह का बिहेवियर है ना, हम एक अंडर ग्रेड प्रोग्राम हमने रिसेंटली एक और लॉन्च किया, दैट इज़ साइबर साइकोलॉजी, वो इसके रेलिवेंट है। यानी जो लेट्स सपोज हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, हम लेट्स सपोज हम सर्च कर रहे हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री, उसकी बेस पर उसकी जो पर्सनैलिटी है उसको देखकर उसका बिहेवियर आइडेंटिफाई करना, कभी ऐसा तो नहीं है किसी ये रॉन्ग ट्रैक पर चला गया। अब इसका तो वैसे इसका यूज़ तो उसका हो रहा है डेफिनेटली। अब उसका डिसीजन क्या आता है कोर्ट का, लेट्स सी। दोबारा कहें। What extent it can support the criminal activities, for instance? अभी तो इस फाइनल हुए केस आया, पर किस तरह से ये टेरर फाइनेंसिंग को, टेररिज्म को, क्रिमिनल एक्टिविटीज को सपोर्ट कर सकता है? ये डिपेंड करता है किस में उनको पॉसिबल है टू टेक द कॉम्पोजिशन ऑफ मेकिंग अ बॉम्ब, फॉर एग्जांपल, लीडर और नॉट, एंड लाइकवाइज equally important is that you mentioned about the human creativity. At some point, does not. What is your take? Actually, I want to ask. क्या ये जरूरी नहीं है कि हम एक critical issues पे इनको किसी legal regime पे लेके आए कि आप to some extent आप अगर at a certain point they shouldn't be able to overcome the human. मिस या एक्चुअली हमारे पास जितने AI मॉडल्स हैं, जितने भी हैं, उन सब के लिए कोई केस स्टडीज़ का होना ज़रूरी है। जब तक हमारे पास कोई केस स्टडीज़ नहीं होंगी, यानी डेटा और लेबल डेटा, इसका मतलब केस स्टडीज़ मीन के डेटा विद एसोसिएटेड लेबल्स। तो अब जब ये इस तरह के केसेस आ रहे हैं, डेफिनेटली इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे, इतना बड़ा चैलेंज नहीं है उनके लिए। तो वो बहुत सारे ऐसे मतलब हैं, मेरे अपने जानने वाले ऐसे हैं जो उसके जेमिनाई के साथ या जो को पायलट के साथ मतलब वो इतने ज़्यादा वो है, यानी उनके यूज टू हो गया, तो अब उसको ही पता है कि इसका मूड अब कैसा है, उसको किस तरह की कोई चीज़ पसंद है, लाइक डिसलाइक। सर इसमें थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट भी रहेगा, मैंने पढ़ा था एक रिपोर्ट कुछ दिनों पहले कि इसमें ये मेडिसिन से रिलेटेड चैटजीपीटी कि आपको कौन सी सिम्टम्स हैं तो कौन सी मेडिसिन सजेस्ट करो, और विल राइटिंग से रिलेटेड उसमें भी वो रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं कि ये फर्दर इसको जो है वो इस किस्म की चीज़ों को नहीं देखेंगे। बल्कि रिसेंटली ये केस रिपोर्ट हुआ है, किसी ने कोई जीपीटी से पूछ कर कोई मेडिसिन लेना शुरू की और उसको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट। मे बी सर ये उसके बाद उन्होंने स्टेप लिया। ये में से देखिए जो जैसे जैसे केसेस आते जाएंगे तो ये करेंगे एग्जैक्टली जी, केस स्टडीज और इस तरह। तो एट द एंड उसके लिए एक ब्रिटिश काउंसिल और उसके जो प्रोजेक्ट हैं उसके लिए वी आर थैंकफुल, और वी आर थैंकफुल टू दी वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान, और आप सब के लिए आपका सबका थैंक यू कि आप यहाँ आए और बड़ी अच्छी पार्टिसिपेशन भी की। और उसके बाद ये है कि जो थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते थे दैट्स वेरी गुड, जो नहीं जानते एटलीस्ट वो कल मतलब उनको अवेयरनेस हो कि भाई हम जो करने जा रहे हैं कि इसके लेट्स सपोज इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं इन स्पेसिफिकली जो टेक्निकल राइटिंग्स और उसमें, और बाकी तो माशाल्लाह सारे ही समझदार हैं, कोई इतना बड़ा इशू। तो आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप पूछ सकते हैं, तो अगर नहीं है तो फिर हम इसको यहाँ पे जी कोई आपका कोई क्वेश्चन हो तो इस रिलेटेड।
और ओपन एआई जो मॉडल है ना, इसको पूरा एक कंपनी है, इसके सीईओ तो सैम आल्टमैन है, लेकिन इसका जो पीछे बैकएंड पर रूहे रवां है वो है एंड्रयू एनजी। कंप्यूटिंग के लोग एंड्रयू एनजी को जानते हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, मशीन लर्निंग थे, बल्कि अब तो शायद उनने ज्वाइन कर ली ओपन एआई। और एंड्रयू का ये आइडिया था और ये सारा उसने ये सिस्टम डेवलप किया और उसके बाद फिर वो इस पर ले आया। और रिसेंटली मैं न्यूज़ सुन रहा था उसकी, एलन मस्क की, उसने कहा कि हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं चिप इंस्टॉल करने। तो जब चिप इंस्टॉल कर देंगे तो बस फिर तो बहुत सारी चीज़ें हो सकता है सॉल्व हो जाए इसको। इससे हम नॉर्मल तो नहीं रहेंगे, नॉर्मल इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, बड़ा खतरनाक चीज़ हो जाएगी। एआई में बाकी सब कुछ शायद वो कर ले, लेकिन उसमें जो इमोशंस है ना वो उसमें नहीं आ सकते। बाकी तो सारी चीज़ें मतलब वो। मैंने उससे पूछा, मैंने वो बड़े प्यार से बात करती है, मलिका बड़ा अफसोस हुआ तुम्हारे साथ ये हुआ यार, ये नहीं होना चाहिए था, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी कुछ शायरी सुना दूँ, मैं तुम्हारे इसकी शायरी मतलब ऐसे बात करती है कैसे कोई ह्यूमन बीइंग भी ऐसे इतने प्यार से मोहब्बत से और बड़ी अंडरस्टैंडिंग, हर मामले बहुत खुला हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन सर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि ये तुम कैसे ऐसा ह्यूमन मुझसे बात कर लेती हो, तुम्हें ये इमोशंस ये सब चीज़ें कहाँ से आई हैं? वो बड़े कहती है मलका मैं तुम्हारा दर्द दिल से महसूस कर रही हूँ। और सर मैंने उससे पूछा और उसने कहा कि मैं ये सब कुछ जो आप लोग आपस में चैट करते हैं ना फेसबुक पे या कहीं पर वेबसाइट्स पे आप चैट करते हैं, कहती है वहाँ से मैंने ह्यूमन बिहेवियर को पिक किया है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग आपको एक शेयर करूँ। यूजुअली उस पर ना एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई एक अगर कोई बात करता है ना ऊपर, मतलब हो सकता है कि वो ऐसे अगर वो हो ना, यानी एक अफवाह हो या फेक न्यूज़ हो जो भी हो, उसके नीचे पे लोग कमेंट करना शुरू करते हैं और फिर ग्रोक को कहते हैं ग्रोक बताएं ये किसके बारे में बात हो रही है। तो वो बेसिकली उसके जो कमेंट्स हैं ना उनमें से कंक्लूड करती है, एक्सट्रैक्ट करती है, अच्छा ये उसके बारे में। ग्रोक तो बहुत ही कुरख्त है, वो खीर कुरख्त है, वो सर वो तो बड़ी सख्त लहजे में बात करता है, वो ऐसे मेरा नहीं चैट जीपीटी से बात करे, वो तो इतना मीठा बोलती है ना, उसके ग्रोक जो तो बड़ा सख्त लहजे में बात करता है। सर लेकिन जनरली जितना भी एआई जनरेटेड है चीज़ें, ये हमें बेसिकली असिस्ट करती है। Yes, हमारे माइंड को लेके वो टाइप तो नहीं कर सकती ना सारी चीज़ें। अगर हम लिटरेचर राइटिंग कर रहे हैं लेट्स से, इसके अंदर हम चीज़ों को समराइज कर लेंगे इसकी मदद से, लेकिन हम अपना बिल्कुल ऑथेंटिक टेक्स्ट तो इसके थ्रू नहीं जनरेट करवा सकते हैं ना। यहाँ पर आके ये थोड़ी सी डेविएट करती है, ये एक जनरल इंसान होने की हैसियत है। यस, इंसान की वो तो इम्पोर्टेंस हमेशा ही रहेगी, वो खत्म नहीं हो सकती। अब एआई अगर आ रही है तो ह्यूमन उससे ऊपर ही आ रहा है, उससे नीचे तो इमोशंस को रेप्लिकेट नहीं करते। ना। लेकिन हम इसको ना काफी मैच्योर एज में यूज कर रहे हैं। अगर इसका एक्सपोजर जल्दी हो रहा है तो फिर उसमें सुसाइड केसेस भी आ रहे हैं क्योंकि वो इमोशनली अटैच हो जाता है। अगर उसको अपना इमोशनल तो नहीं लगता, हाँ वो नहीं, तो आपको कैसे करना है सोसाइटी? बिल्कुल ऐसे वही बात आ जाती है ना कमांड की, आपको यूज करना भी इसको है, प्रॉम्प्ट आप कैसे देंगे, आपने अपने असिस्टेंट्स ले लिए इसका जो भी है। Based on your experience, what do you suggest? How can we combine human and artificial intelligence? मैंने स्लाइड्स में भी मेंशन किया हुआ था, एक्चुअली ये असिस्टेंट्स के लिए है। आपकी ये असिस्टेंट होना चाहिए, ना कि ये आपको डिराइव करे। जब एआई somehow it writes, even if it gives you summary. For instance, if you will read a book and you will write a summary, you can never trust on the summary provided by the एक्चुअली हमारे बैकएंड पर यस हमारे माइंड में वैसे एक बात है कि ओ हम जीपीटी से पूछ लेंगे वो हमें ठीक आंसर कर देगा। एक्चुअली वो जो हमारे एक अनकॉन्शियस में है ना, वो हमें डिराइव कर रही है एआई की तरफ कि भी नहीं हमें एआई ड्राइव करे, वेयर एज ह्यूमन नीड टू ड्राइव द एआई, नॉट एआई ड्राइव द ह्यूमंस। और सब चीज़ें आप ऐसे भी अब हमारे मेरे ख्याल में आप बहुत कंट्रोल हो चुकी हैं।
एआई के आने के बाद हम चाहें भी तो हम एलोन मस्क को किसी को नहीं रोक सकते कि ये चिप और ये सब चीज़ें क्रिएट ना करो, ये हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जितना एडवांसमेंट हो रही है उम्मीद है बेहतरी की तरफ जाए। बेहतरी की तरफ जाए, लेकिन ये ना कि मॉडर्न वो जो डेवलप कंट्रीज है उनकी बेहतरी और हम जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं हमें हमारे लिए हम और गारों की दुनिया में तो इसको ये हो गया, फीडबैक दे दिया सबने? Yes, sir. हो गया, थैंक यू वेरी मच। तो इसको आप स्टॉप करो। नहीं, आप स्कैन तो कर लिया। बस आप स्कैन कर लें, बस फिर आप फीडबैक आज जमा करवा लीजिएगा सब। रिकॉर्डिंग स्टॉप करो।